let's start. Now, first thing about light. What is the first thing which comes into our mind about light? We all know light is a source of energy, right? Let us put some points down about light. First of all, we know light is a source of energy, right? Like we know, sound is, I can say, I'll basically write down, light is a form of energy, not source. Light is a form of energy, right? जिस तरह से I can say sound is a form of energy, right? Heat is a form of energy. अलग तरह के energies होती है. उसी तरह से light is also one form of energy. And if I talk about light, then light is present all around us, right? If you are looking at this video in a room, you might have a bulb or you might have a tube light in your room, right? Because of that tube light or because of that bulb, what do we get? We get light. Okay. Now during daytime, we know we get the light from the sun. Okay. That's why light is present everywhere around us. That is why the study of light becomes very, very important. Now friends, let me tell you one thing. Let me ask you one question. अगर मैं एक रूम में हूं जहां पर लाइट है, तो क्या ये मैं पेन को देख सकता हूं उस रूम में? You will tell me, sir, yes, लाइट है, या तो सनलाइट हो, चाहे ट्यूब लाइट हो, चाहे बल्ब की लाइट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं इस कलर पेन को देख के कह सकता हूं दिस, ओके, दिस इज अ रेड कलर पेन, राइट? ओके, मैं कह सकता हूं. पर अपने आप को मैं एक रूम में बंद कर दूं, विंडोज भी बंद कर देता हूं रात के टाइम पे, ओके, लाइट वाइट सब बंद है, और फिर मैं पेन का कलर देखने की कोशिश करूं, तो क्या ये रेड कलर की पेन मुझे दिखेगी? योर आंसर विल बी नो. सर, नो, यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट, राइट? कैन यू सी द कलर ऑफ दिस पेन इन नाइट? पूरा अंधेरा है, डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस, नहीं देख सकते हो. यू विल गिव मी एन आंसर, सर, कि हम इस पेन का रेड कलर क्यों नहीं देख पा रहे रात को जब पूरा अंधेरा है? तो यू विल टेल मी, सर, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज नो लाइट, राइट? हेंस, फॉर having a visibility of an object, if you want to see an object, look at an object, you definitely need the presence of light. Okay, hence study of light is very, very important, because light is an important factor for us for the visibility of an object, as that what I said. Now friends, for example, I have this pen. Okay, I'm just drawing a diagram of a pen. Okay, now how can I see this pen? Come on, how can I see this pen from light? Let's say it's a daytime, right? Let me explain the phenomena how we can look at objects. हमें objects दिखते क्यों हैं, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ. Okay, let's say during daytime you have a tube light. Okay, light है हमारे पास, तो let's say ये हमारी eyes है. Okay, let's say these are our eyes. Fine. Normal day में क्या होता है पता है? फॉर एग्जाम्पल, यहां कहीं तो सन है मेरे पास, ओके, कहीं यहां ऊपर सन है, और सन हमें लाइट देता है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ वेरी चाइल्डिश मैनर, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. तो ये सन की लाइट है ना, इस पेन के ऊपर पड़ेगी, और फाइनली वहां से वो लाइट मेरे आईज में आएगी. ट्राई एंड अंडरस्टैंड थिंग्स. सन की वो लाइट इस पे पड़ेगी, पेन पे पड़ेगी, और वो लाइट फाइनली वहां से आई कैन से रिफ्लेक्ट होकर मेरे आईज में आएंगी, तभी मैं उसे देख पाऊंगा. समझ में आया? अगर फॉर एग्जाम्पल पेन है, सेकेंड केस, पेन है, बट यू डोंट हैव सन, योर आई इज ऑल्सो देयर, योर आई इज ऑल्सो देयर, बट यू डोंट हैव सन्स लाइट, सन नहीं है, तो देयरफॉर दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट बी विजिबल. ओके, सो दिस इज विजिबल, this is not visible. Okay, hence we need light for visibility. ये basically light है, right? सन यहां पर लाइट दे रहा है, ये लाइट यहां स्ट्राइक हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, ये सन से लाइट आ रही है, यहां स्ट्राइक हो रही है, मेरी आईज में गई, मैंने देख लिया, आई कैन सी द ऑब्जेक्ट. कंप्लीट डार्कनेस है, नो लाइट, नो ऑब्जेक्ट, राइट? हेंस यू अंडरस्टूड हाउ वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स. वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन द लाइट कम्स ऑन देम, and after striking them, they strike our eyes back, right? Eye, and like this. Okay, fine. So this is nothing but the phenomena of visibility. This is how things are visible to us. Now one more thing, guys, let me tell you one more thing. In this chapter, we are going to treat light as a line. We are going to take a ray of light. Now what do you mean by ray of light? I'll write this word, ray of light. We'll say light is like this.
दिस इज अ रे ऑफ लाइट. ओके, हम लाइट को एक लाइन में दिखाएंगे. समझ में आया? जब कभी हम लाइट को एक लाइन से दिखाते तो हम कहते हैं इट्स अ रे ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू हैव अ बल्ब हियर, राइट? दिस इज अ बल्ब and this bulb is giving out light in straight line, right? So this straight line is called as ray of light. You understood what is ray of light? When light is in the form of a straight line में होगी तो हम इसे कहेंगे ray of light. Understood? Clear? So these are certain introduction parts. Now guys, starting some conceptual parts, then in our nature there are two types of objects. One are called luminous objects and others are called non-luminous objects. Let me give you some examples. Come on. First type of objects, luminous objects, and I'll explain them. Non-luminous objects. Non-luminous objects. Okay, there are two types of objects in nature. Now what are basically luminous objects? Luminous objects are those objects which can produce their own light. Let me just write down. They are objects which can produce their own light. ओके, फाइन. वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो अपनी खुद की लाइट बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैंडल. आई कैन से कैंडल, राइट? आई राइट डाउन एन एग्जाम्पल. कैंडल. यू ऑल हैव सीन अ कैंडल, राइट? क्या एक कैंडल, या इफ आई से दिया, कैंडल और दिया, कैन इट मेक इट इट्स ओन लाइट? यस, हमें कैंडल से लाइट मिलती. कैंडल अपनी खुद की लाइट बना सकता है. जो अपनी खुद की लाइट बना सकता है उसे कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, राइट? अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वुड बी कैंडल. वन मोर एग्जांपल, बल्ब. क्या बल्ब को हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या अपनी लाइट बना सकता है? यस, डेफिनेटली. बल्ब कैन प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, राइट? बराबर, अपनी खुद की लाइट बना सकता है. अगर ये रूम डार्क है और मैंने बल्ब जला लिया तो वो बल्ब क्या करेगा? अपनी खुद की लाइट बना करके ये पूरे रूम को ब्राइट कर देगा. ऑफ कोर्स, अनदर एग्जांपल कैन बी द ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन प्रोड्यूस लाइट विल बी, आई कैन से योर टीवी, राइट? टीवी में से भी लाइट निकलती है, राइट? इट जनरेट्स इट्स ओन लाइट, राइट? किसी और की लाइट की जरूरत नहीं, वो खुद अपनी लाइट बनाता है. वन मोर थिंग, ट्यूब लाइट. सिंपल एग्जाम्पल, ट्यूब लाइट भी अपनी खुद की लाइट बनाता है. ओके, there can be number of examples. Okay, so this is nothing, they are nothing but called as luminous objects. जो अपनी खुद की लाइट बना सकते, they are called luminous objects. Fine, simple. Now what are non-luminous objects? Exactly opposite. The objects which cannot produce their own light, right? The objects which cannot produce their own light. वो अपनी खुद की लाइट नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल, ये पेन. क्या ये पेन अपनी खुद की लाइट बना सकता है? नॉट पॉसिबल. ये बुक क्या अपनी लाइट बना सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल. ह्यूमन बींग्स, क्या हम अपनी लाइट हम ऐसा कुछ करके लाइट बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल, राइट? सो आई कैन से लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सिंपल एग्जाम्पल्स, पेन, बुक, सम चाइल्डिश एग्जाम्पल. ओके, ह्यूमंस, we cannot produce our own lights, right? अच्छा, luminous objects में मैं एक important चीज तो डालना भूल ही गया. sun अपनी खुद की लाइट बनाता है, right? sun can produce its own light. तो इस तरह से one more important example, sun is also a luminous object, whereas all the other objects like as you can see, book, pen, table, etc., they are non-luminous objects. They cannot produce their own light. Okay, so this was the basic introduction about light. Now guys, as I said basically to you, that we have split up this chapter into two parts. First we'll see reflection and then we'll focus on refraction. Okay, so friends, let's begin the first important concept of this chapter, that is the part of reflection of light. Come on. Reflection of light. First I'll write down the definition, okay?
How do you define reflection? First, let us memorize I can say the definition, then we'll understand what their definition says. Definition of reflection of light. Reflection of light, it is nothing but it is the phenomena of ray of light after falling on a smooth polished surface returns back to the same medium. I'll write it and then explain it to you. Reflection of light, it is the phenomena in which a ray of light after falling on a smooth surface reflects back in the same medium. I'll explain this to you. Dekho. Okay? Dekho. This is nothing but the fact that when light is falling on a smooth surface, for example, this board is a smooth surface, okay? Okay? This light, for example, this pen is the ray of light, okay? Ye pen aaya, ye ray of light aaya, it is falling on the smooth surface and it is returning back into the same medium, right? Ye medium se aaya, is pe fall kiya, and it is returning back, wapas ja raha hai, okay? Returning back. This phenomena is called reflection of light. Okay, let's look at the definition. The phenomena in which the ray of light after falling on a smooth surface reflects back in the same medium. वो उसी medium में वापस चला जाएगा, आएगा, touch होगा, hit करेगा basically, and वापस जाएगा. This phenomena is called, it will go back again. That is called as reflection of light. I hope that is absolutely clear. Now guys, reflection of light, I'll give you one simple example. That reflection of light basically takes place from a smooth surface. Now what is a smooth surface? This important term, smooth surface. The surface has to be smooth. Okay? Smooth, also known as polished. Polished, okay? It should be highly polished, okay? I'll give you one example. See, this is a metal surface. Some household things I've taken into account. This is a metal surface, right? You know, ye bahut highly polished. It's a smooth surface, right? Now, I'll use a torch to show reflection, right? So, using my mobile torch, I am making my light fall on this smooth surface, right? ये देखो आप देख रहे हो light fall हो रही है, right? So when this light is falling, it is coming back, जाके वापस आई. Because of it, it's coming back. You can see the light, right? आप देख सकते हो. You can see this light, right? So because of the returning back of this light, as you can see, this is nothing but the phenomena of reflection, right? Okay, so we are definitely clear with the concept of reflection, that what reflection exactly is. It is the falling back of a ray of light it is the returning back of the ray of light after falling on a smooth surface. Okay, I'm repeating this again and again because it is very, very important. आएगा, वापस जाएगा, same medium के अंदर. Fine. Let's take an example and let's see, or I can say let's see the law now. What is the law? Now guys, let's take a smooth surface. Come on. I'll take into consideration one smooth surface. I'll just remove this. I'll take a smooth surface. Smooth, polished surface, okay? This is one surface. Okay? This is one surface. Upper portion is smooth. बहुत smooth है. Metal कैसा smooth होता है आपने देखा? मैंने अभी example दिया. उसमें metal जो था, that was very smooth and highly polished, right? So we'll take a smooth surface, and on that smooth, this is nothing but your smooth surface. Smooth surface, or you can even say smooth, or I'll replace this, polished, right? Fine. Okay? Polished. Okay, make the spelling correction. Polished surface. Now, let's consider the ray of light. Come on. There is a ray of light coming and hitting this point. This is the point. And you have some ray of light coming and hitting it. So let's say this is the ray of light which is coming, right? I'll draw that again for better view. Right. This light is hitting this point. Okay. Now guys,
the light which comes in, I'll show it that by an arrow. This arrow shows that it is coming in, right? It is coming like this. Now the light which is coming in or falling on the surface, that is called as the incident ray. What is this called? This is called as the incident ray. The one which comes in, अंदर जो आती है, surface की तरफ जो आती है, that is called the incident ray, okay? So what is the definition of incident ray? I can write down the definition here. Incident ray, it is the ray of light. You need to remember the definitions too, okay? It is the ray of light falling on the surface or smooth surface. It is the ray of light which is falling on the surface. Okay, this is the incident ray which is, जो आ रहा है उसे incident ray कहते हैं. Fine. Now guys, जो point पे hit करता है ना, उसे कहते हैं point of incidence. I'll just write down. This is called point of incidence. Which point? This point. ये जो point है, जो point पे incident ray आके hit कर रहा है, that is called as point of incidence. Okay. Now, the second thing is the normal. Let's study what a normal is. Now, I'll draw a normal, then I'll explain you. This dotted line which I have drawn, this is called normal. Okay? Fine. Now, what is the definition of normal? अगर आपको कोई normal पूछे तो उसका definition क्या होगा? Normal is nothing but it is the line which is at right angles. आप देख सकते हो right angle है, right? दोनों side पे right angles है. Right angle मतलब 90 degree. So the normal is nothing but it is the line which is at right angle to the surface, right? Which is at right angle to the surface at the point of incidence. Point of incidence पे वो right angle बनाता है. Okay, so I'll just write down the definition of normal. Let's come here. I'll write down the definitions here. What is a normal? Line perpendicular to the surface at point of incidence. Okay, so two things we have learned up till now at the point of incidence. The first thing was incident ray. The second thing is normal. Now come back to the diagram. Come on. ये incident ray है, ये normal है. We know. Come to this diagram. जो incident ray आएगा वो वापस जाएगा, right? It will reflect back, right? Because it is a smooth surface, so the incident ray which is coming in, that will go back, right? जिस तरह से हमने टॉर्च को देखा था, जो लाइट आ रही थी वो वापस भी जा रही थी. जब वो वापस जा रही थी तो आपको लाइट दिख रही थी, right? That is why you can see light. Fine. So this will go back. Now, the light which is going back, right? The light. This is the light which is coming, and this is the light which is going, right? Now this is called as the reflected ray. क्या कहते हैं इसे? The one which is going back is called as the reflected ray. Okay. Now what is the definition of reflected ray? The simple definition would be the reflected ray is nothing but it is the ray of light that gets reflected. Simple. Reflected ray. I'll write down the definition. It is, in short I'll write down, the ray of light which gets reflected. Okay, fine. So this is the ray of light that is getting reflected. जो बाहर जा रहा है, outwards जा रहा है, that is called the reflected ray. Now guys, two more things. तीन चीज पढ़ी, incident ray, normal, reflected ray. Two more things to complete this out. Now guys, जो incident ray है ना, वो normal के साथ एक angle बना रहा है. आपको पता है, दो lines के बीच में angle बनता है. Two lines make an angle, right? So this normal and incident ray make an angle. Let's call that angle as I. Okay? What is this I? I is nothing but it is the angle of incidence. Okay? This I, this is nothing but the angle of incidence. So what is angle of incidence? Come on, let's write that down too. I'll write down the definition. Angle of incidence, very important, very, very important. Angle of incidence
Okay, what? It's an angle, right? Barabar? Or I'll even write down out here, this is angle of incidence I. So what is angle of incidence? It is the angle made by, किन दो चीजों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस है? आप कहोगे सर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, राइट? सो द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस, इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल. सिंपल. द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल. इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, that is called as angle of incidence, right? Fine. Now the last thing, the fifth part, another angle. You can see this is also one angle, right? J का angle ये बन रहा था. जिस तरह से incident ray एक angle बना रहा है, उसी तरह से reflected ray भी एक angle बना रहा है. Let's call that, for the time being, let's call that as R dash. R भी कोई books लिखते हैं, R dash भी लिखते हैं, one and the same thing, okay? So this R dash, now what is this R dash? This is called angle of incidence. This is called angle of reflection, right? ये angle of incidence, ये angle of reflection. Let's write that down. R dash, जो मैंने कहा है. What is that? That is nothing but the, I'll write down, angle of reflection. Okay, can you define this? Come on, make an attempt. कोशिश करो. Angle of incidence क्या था? Angle made by the incident ray with the normal. उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, राइट? रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? सो लेट्स राइट दैट डाउन. द एंगल, आई एम राइटिंग ओनली द इंपॉर्टेंट स्टफ गाइस, आई एम नॉट राइटिंग द होल टेक्स्ट बुक. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछने वाली चीज है, दिस कैन डेफिनेटली बी वन क्वेश्चन इन द एग्जाम. एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, yeah, define angle of reflection. You should be in a position to write that, okay? So the angle made by the reflected ray with what? With the normal. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कभी कभी गड़बड़ में. In a case of a hurry, people think that this will be angle of incidence or this will be angle of reflection. ये नहीं भूलने का. Always the angle, remember one point, crucial point, golden words, याद रखो, भूलना नहीं. Always these two angles ना are with normal. दोनों एंगल नॉर्मल से ही बनाने हैं, ठीक है? तो इंसिडेंट रे नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, ओके? तो these are nothing but the two angles, that is angle of incidence and angle of reflection. 5 important terms. I'll just quickly revise them in, let's say 30 seconds. Come on. 5 important terms. सबसे पहले इंसिडेंट रे जो अंदर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. नॉर्मल 90 डिग्री जो जा रहा है, राइट एंगल, राइट? नॉर्मल वापस जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, द वन विच इज गोइंग बैक. एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देयर. नाउ गाइस, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट्स, वी नीड टू रिमेंबर 2 laws. देयर आर 2 laws ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया, आएगा वापस जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्शन. Now there are 2 laws of reflection. Let's put them down. Come on. This is also an expected question in the exam. Very simple. Laws of reflection. Laws of reflection. Come on. The first law, very, very important law. There are 2 laws. First law. Okay, let's come back to the diagram. I'll explain you the law. Then we'll write that down. Come on. The first law is, look here. The first law says, angle of incidence is equal to the angle of reflection. Understood? I'll repeat again. ये जो 2 angles है, ये दोनों equal है, बस खत्म. Simple सी चीज याद रखनी है. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. That's it. Finish. लिख दो. So it's nothing but the angle of incidence is equal to the angle of reflection. I may even use R, R dash, one in the same thing. मैंने reflection angle को R dash का है, ठीक है? R उसके ऊपर छोटा सा dash. Fine. You can even denote it by A, B, C. Doesn't make any difference. पर important ये है कि दोनों angles equal है. The 2 angles are equal. I can even write it like this. I or angle I is equals to angle R dash. Fine. Okay. Second law.
The second law is, let's come back to the diagram, then we'll write down. Come on. The second law is, the incident ray, the normal and the reflected ray lie in the same plane. Okay? ये सब एक ही plane में. Plane मतलब, देखो, ये एक ऐसे पूरे, ये इसको कहते हैं plane. ठीक है? आप एक शीट को लोगे, फॉर एग्जाम्पल एक पेपर की शीट उठाओ, उसे कहेंगे प्लेन, राइट? फॉर एग्जाम्पल दिस इज नथिंग बट दिस इज अ प्लेन, राइट? जो सीधी सरफेस होती है ना, उसे कहते हैं प्लेन. ये बोर्ड भी सीधा साधा है, राइट? तो इसे हम प्लेन कहेंगे. फाइन, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. लाइक इफ यू कंसिडर द केस ऑफ अ पेपर, ओके? पेपर को देखोगे तो स्ट्रेट पेपर इज अ प्लेन, बट वो पेपर को हम क्रश कर दे तो दैट इज नॉट अ प्लेन, राइट? तो जो स्ट्रेट होता है ना, उसे कहते हैं प्लेन. ओके, so coming to our definition, come on, let's complete that. What was that? Incident ray, normal and the reflected ray, all of them lie in the same plane. Okay, let's write that down. Come on. The incident ray, comma, normal and reflected ray lie in the same plane. They all lie in the same plane. Okay, fine. Now guys, there are some books, guides and all, which even introduce the third law of reflection. That is also valid. For full marks you can write that also, right? ये दो लिखोगे तो भी full marks मिलेंगे, but to create a good impression that you know everything in terms of this particular chapter in the mind of the examiner, let's write one more law. Very simple law. पहला लॉ हमने पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकंड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन. सभी के सभी एक प्लेन में, जैसा मैंने आपको समझाया. ओके, फाइन. थर्ड लॉ है, जो आप चाहो तो लिख सकते हो. द थर्ड लॉ इज, कम बैक टू द डायग्राम, कम ऑन. थर्ड लॉ इज, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल. ये नॉर्मल है ना, इसके एक साइड पे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, और एक साइड पे, वन साइड पे रिफ्लेक्टेड रे, राइट? देयरफॉर आई कैन से दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड. एक साइड पे नहीं, ऑपोजिट साइड्स पे. ओके, देयरफॉर द थर्ड लॉ इज लाइक दिस. द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. दोनों ऑपोजिट साइड्स पे, एक साइड पे नहीं, ऑपोजिट साइड पे. ओके, सिंपल सा है. ठीक है? सो इफ यू राइट ऑल दीज थ्री, यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट फुल मार्क्स. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पार्ट ऑफ मिरर्स. लेट्स सी मिरर्स. कम ऑन.